Hello, genius brains. How are you all? Very warm welcome to your social science class with your teacher Aprajita. And children, today we are going to start geography. आज से हम geography पढ़ेंगे और geography में हम पढ़ेंगे आज chapter number 12 our environment. आज हम अपने environment के बारे में पढ़ेंगे. So we start the chapter here, class 7 geography. In this chapter, components of environment. क्या है components of environment? Then natural environment. क्या है natural environment? What is ecosystem and human environment? So let's start the chapter. An environment is everything that is around us, which includes both living and non-living things, such as soil, water, animal and plants which adapt themselves to their surroundings. Environment जो कुछ भी हमारे आसपास है वो environment है. अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं. और वो क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे सॉइल है, वाटर है, एनिमल्स, प्लांट्स, जो कि अपने आप को सराउंडिंग्स में अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं. Now let's read about the components of environment. The environment is divided into two parts, natural environment and human environment. अब जो environment है उसके दो parts होते हैं. एक है natural environment और दूसरा है human environment. So let's read about the natural environment first. It includes both living and non-living things. The biotic or living components are biological things such as plants, animals, insects, etc. अब ये जो natural environment है इसमें living things भी हैं और non-living things भी हैं. The biotic जो living components हैं वो हैं plants, animals, insects. The abiotic or non-living components are physical things. अब abiotic things कौन से हैं? Abiotic मतलब non-living things कौन से हैं जो components हैं? Those are land, minerals, soil, water and climate. Now the human environment. It includes all the things like buildings, roads, machines and social and cultural factors like family and school. And human environment में सब चीजें आ जाती हैं जिसमें कि buildings भी हैं, machines भी हैं, roads हैं, social और cultural factors like family है and the school. These are all the human environment. Fine children? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, natural means जो nature हमें देता है, चाहे वो living हो या non-living. Okay? Natural environment. Environment which has no control of humans and is present naturally or on their own is known as natural environment. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि natural environment में humans का कोई interference नहीं है, जो naturally हमारे आसपास present है उसे कहते हैं natural environment. Land, water, air, plants and animals are the elements of natural environment. It consists of 4 realms. अब natural environment 4 realms हैं. क्या हैं वो? Lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. First, let's read about the lithosphere. Lithosphere is the thin and solid upper covering or crust of the earth. अर्थ का जो क्रस्ट है, जो अपर कवरिंग है, पतली सी अपर कवरिंग जो होती है वो होती है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. और जो लिथोस्फीयर है किससे बना हुआ है? रॉक्स और मिनरल्स से. द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर. जो एवरेज थिकनेस है लिथोस्फीयर की वो है 100 किलोमीटर. Here we can find both continents 29% and ocean beds 71%. Lithosphere has 2 layers. अब lithosphere के भी 2 layers हैं. क्या क्या हैं वो? Sial and the Sima. Sial are rocks of the continents rich in silica and aluminium. Sial जो है वो rocks होते हैं और वो rich किस में होते हैं? Silica और aluminium. So it is called Sial. Sial means Si, silica, Al, aluminium. Fine children? Sima, rocks from the ocean basin
रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है SI मीन्स सिलिका एंड Ma मीन्स मैग्नीशियम, so it is called CIMA. Lithosphere provides us forests, grassland, agricultural land and the land for human settlement. लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड और जहां ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट की प्लेस, एंड एग्रीकल्चरल लैंड टू. It is a source of mineral wealth because all kinds of minerals and metals are embedded in the rock strata. Next is the hydrosphere. Hydrosphere is the domain of water. It covers about 3/4 of our earth surface. हमारी earth surface का 3/4 part water से. It includes water bodies like water bodies कौन सी हैं? Oceans, seas, rivers, lakes, etc. More than 71% of the earth surface is covered with water. Earth का जो 71% से भी ज़्यादा जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, अर्थ सरफेस. सो द अर्थ इज समटाइम्स कॉल्ड वाटरी प्लैनेट. इसलिए अर्थ को कभी कभी वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है. इट इज ओनली द प्लैनेट विच हैज वाटर. यही एकमात्र प्लैनेट है जिसपे वाटर अवेलेबल है. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ. वी नीड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज. फार्मर्स नीड वाटर फॉर देयर क्रॉप्स and industries need water for manufacturing. सबको वाटर की जरूरत होती है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो या फार्मर हो या डोमेस्टिक यूज. इट प्रोवाइड्स अ हैबिटेट टू द मरीन लाइफ एंड फूड इन फॉर्म ऑफ फिश, श्रिम्प्स, क्रैब्स एटसेट्रा. अब ये जो हाइड्रोस्फीयर है ये एक हैबिटेट देती है मरीन लाइफ को और फूड प्रोवाइड करती है मरीन लाइफ को इन द फॉर्म ऑफ फिश, श्रिम्प्स एंड क्रैब्स. Even in the seabed, deposits of mineral oil and gas are found. Seabed में भी mineral oil और gas हैं. Oceans are major links between land masses and hence promote trade and culture. जो oceans हैं वो एक major link है land masses के बीच के और इसलिए ये क्या promote करते हैं? Trade और culture. Now, fact to know, water is also present in atmosphere in the form of water vapor. Atmosphere में water भाप के रूप में भी मिलता है. Atmosphere, the blanket of air surrounding the earth is known as atmosphere. जो पूरे अर्थ को एक एयर की चादर, हवा की चादर जो ढकी हुई होती है अर्थ के चारों तरफ, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर. It is a mixture of gases, dust and water vapor. ये एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर है किस चीज का? गैसेस का, डस्ट का और वाटर वेपर मतलब भाप. The atmosphere extends to about 1600 km from the surface of the earth and the gravity of the earth holds it. ये जो एटमॉस्फेयर है कहाँ तक एक्सटेंड करता है? 1600 km from the surface of the earth. और इसको क्या होल्ड करके रखती है? अर्थ की ग्रेविटी. Air has oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases. अब एयर में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी गैसेस. ऑक्सीजन कितना है? 21% इज एसेंशियल टू ब्रीथ. ऑक्सीजन किसने चाहिए होता है? हमें सांस लेने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 0.03% which is needed by plants to prepare their food. and अब कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए चाहिए होता है? प्लांट्स को चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, जो कि 0.03% है. and nitrogen 78% is used by plants for their growth. और जो नाइट्रोजन है वो 78% है जो कि प्लांट्स को जरूरत होती है उनके ग्रोथ के लिए. The other gases are, अब और जो बाकी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, आर्गन, नियॉन, हीलियम एंड मीथेन. चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो वेदर में भी चेंज होता है और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज होती है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. जो एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? अल्ट्रावायलेट रेज. It also prevents the earth from becoming extremely hot and cold.
बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंड से भी ये एटमॉस्फेयर हमें बचा। Now, fact to know, the ozone layer is a layer in the Earth's atmosphere which contains high concentration of ozone 03 gas. This layer absorbs 93.99% of the sun's high frequency ultraviolet rays. अभी जो ओजोन लेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसमें क्या है, इट कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन O3 गैस होती है। दिस लेयर एब्सॉर्ब्स, अब ये कितना परसेंट एब्सॉर्ब करती है सन की हाई फ्रीक्वेंसी जो अल्ट्रावायलेट रेज है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज का 93.99% ये लेयर एब्सॉर्ब करते हैं, विच आर पोटेंशियली डेंजरस टू लाइफ ऑन अर्थ। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से, ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट इज द बायोस्फीयर, द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, द अपर पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर and a part of hydrosphere form the biosphere. एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट, लिथोस्फेयर का अपर पार्ट और थोड़ा सा पार्ट हाइड्रोस्फीयर का, ये सब मिलके बनते हैं बायोस्फीयर। इट इज द प्लेस वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर फाउंड। ये वो जगह है जहाँ पे लाइफ के हर फॉर्म में, इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक plants, animals, insects, microorganisms, and human beings. Fine, children. Now let's read about the ecosystem. An ecosystem is a structural and functional unit where all living organisms interact with one another as well as the surroundings or the non-living parts of the environment. Ecosystem क्या है? एक structural और functional unit है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, पार्ट्स के साथ भी इंटरैक्शन करते हैं। मोस्ट इकोसिस्टम्स कैरेक्टरिस्टिकली possess a well-defined soil, climate, flora and fauna or communities and have their own potential for adaptation, change and tolerance. अब ज्यादातर जो इकोसिस्टम्स हैं वो उनको पोजेस क्या करते हैं, एक वेल डिफाइंड सॉइल, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फॉना। द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल। जो इकोसिस्टम का फंक्शन है उसमें क्या इन्वॉल्व है, एक सीरीज ऑफ साइकिल जैसे कि वाटर साइकिल। एवरी इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर लाइक एक्वेटिक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ह्यूमन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। ये सब अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं। इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल और बिग। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। नाउ फैक्ट टू नो, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स के बारे में जो रिलेशनशिप की जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है इकोलॉजी। Nature maintains a perfect balance between all the components of the environment within each ecosystem. हर एक ecosystem में nature जो है वो एक perfect balance maintain करता है सभी components के बीच। If any one component of ecosystem is disturbed, this balance can get easily disturbed. अगर एक भी component ecosystem का disturb होता है तो पूरा balance जो है ecosystem का बिगड़ सकता है। Human environment, अभी तक हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, नाउ विल रीड अबाउट द ह्यूमन एनवायरनमेंट। मैन मॉडिफाइज द एनवायरनमेंट वेयर ही लिव्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू सूट हिज नीड्स। अब मैन क्या करता है, वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, बहुत हद तक एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। क्यों? क्योंकि उसको जहाँ रहना है वो उस जगह को अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई करता है, उसकी जो नीड्स होती हैं उसके हिसाब से। With the help of technology, he learned to grow crops, to domesticate animals, and started living a settled life in villages. अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजीज आती गई, उसके साथ ही इंसान ने क्या किया, उसने सीखा क्रॉप्स को उगाना टेक्नोलॉजी के थ्रू, डोमेस्टिकेट करना एनिमल्स को और एक सेटल लाइफ विलेज में जीना। Then trade and commerce, industrial and efficient means of transport and communications developed.
उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड डेवलप हुआ, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल और एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप. ह्यूमन एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन क्रिएटेड. जितना भी कुछ ह्यूमन ने क्रिएट किया है, इंसान ने क्रिएट किया है, वो सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, रेलवेज, फार्मलैंड्स, etc. Man has controlled his environment in many other ways as well. और बहुत और भी दूसरे तरीकों से man ने इस environment को control किया. Like plants have been cultivated in places which are far from their natural habitat. एक plant जिसका कि natural habitat कुछ और है, वो भी cultivate किया जा सकता है कहीं और, जहाँ उसका natural habitat नहीं है. Different environments have different qualities and uses. The need of the hour is to limit the use of resources and protect the environment. आजकल की नीड क्या है कि जो resources available हैं उसको लिमिट में यूज किया जाए और environment को protect किया जाए, बचाया जाए. This is possible by controlling population growth, preventing pollution, planting trees, using alternative eco-friendly fuels like CNG and prohibiting the use of pollutants. इन सब चीजों को करने से इस environment को बचाया जा सकता है. This will help to maintain the balance of the nature and preserve our environment for the future generations. ऐसा करने से हम एक balance बना सकते हैं nature में और अपने environment को preserve कर सकते हैं आने वाली generations के लिए. Fine children, see buildings, railways, human environment, and this the planting of trees in the farmlands. These are all human environment. So children, let's read the important facts which we have learned just now read in the chapter. The surroundings in which an organism lives is its environment. क्या होता है environment? जो surrounding जहाँ पे एक organism रहता है उसे कहते हैं environment. The two parts of environment are natural environment and human environment. Natural environment includes, अब natural environment में क्या क्या है? Air, water, land and food which are essential for living beings. It comprises of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. The human environment includes everything that has been made by the humans. जितना भी कुछ जो कुछ भी humans ने बनाए हैं, इंसान ने बनाया है, वो सब human environment में आता है, such as buildings, dams, bridges, etc. Resources should be used judicially and all measures should be taken to protect the environment. Now let's do the exercise children. Objective type questions. Take the right option. The plants, animals and human beings are dash components. कैसे components हैं ये? Plants, animals and human beings. Biotic, abiotic, none of these. These are the biotic components. So let's take A, that is biotic. Lithosphere is a thin layer of dash soil, water, air. It's a thin layer of soil. Dash is essential for all living beings to breathe. सांस लेने के लिए क्या जरूरत होती है सभी living beings को? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. We need oxygen to breathe. Dash is the narrow belt where the atmosphere, lithosphere and hydrosphere meets. उस नैरो बेल्ट को क्या कहते हैं जहाँ ये तीनों चीजें मीट करती हैं? एक्सोस्फीयर, बायोस्फीयर, both of these. It's known as biosphere. Human environment includes dash factories, families, all of these. All of these. Human environment includes factories also and families also. So now children, let's do the match the following. Environment. We have just read about environment. क्या होता है environment? Surroundings of human beings is the environment. Lithosphere. Lithosphere, it's the solid outer covering of the Earth's surface consisting of rocks and soils. So match it with D. Biosphere. What's biosphere? Biosphere is the interacting part of atmosphere, hydrosphere and lithosphere that supports life. जहाँ तीनों मिलते हैं, that forms biosphere. Hydrosphere, seas, oceans and other water bodies surrounding the earth. Hydro means water, so it consists of all the water bodies. Ecosystem,
formed by the interaction of plants, animals, and humans with each other and with their environment. So match ecosystem with A. Now write T for true and F for false. Abiotic components contain land, water, minerals, etc. Yes, this is true. Write down T here. The lithosphere is made up of rocks and soil. Yes, this is also true. Write down T. Water, which forms about 3/4 of the Earth's surface, is called biosphere. No, this is false. F. The gas which is very important for human existence is argon. Is it so? क्या argon जरूरत होती है हमें breathe करने के लिए? No. This is false. Write down F. Atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. Yes, this is true. G. And now lastly, children, let's do the fill in the blanks. The surroundings in which an organism lives is its, the surroundings है जहाँ पे human beings रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? Is its environment. Environment. Fine? It's its environment. Dash components refer to non-living things. Those are abiotic components. Abiotic. The dash is the outer covering of the earth on which we all live. The outer covering of the earth is the lithosphere. So write down lithosphere. Nitrogen constitutes about dash of the earth's atmosphere. It constitutes about 78% of the atmosphere. Okay? And the last one is dash is needed by the plants to prepare their food. अपना खाना बनाने के लिए plants को क्या चाहिए होता है? They need carbon dioxide. Carbon dioxide. Fine, to prepare their food. Okay, children? So here we end up with our chapter and I hope you have understood it well. So go through the chapter again. We'll meet soon with a new chapter. Till then, stay blessed and keep learning. Have a nice day. Bye.